is representing the topmost portion of the Samana Suk. This yellow color is hello. Walaikum salam. Can you see this lateral Video horizon on the surface on top? This whole surface, if you compare this with this particular boulder, this big boulder, can you see the lateritic horizon on top of this? So this is the same surface along this. So this is marking a sequence boundary on top of a carbonate platform. This is what we call type 2 sequence boundary because it lies on top of the HST. Remember, whenever we talk about type 2 sequence boundary, it is relative. The mechanism of the development of a sequence boundary is the same as for the type 1 sequence boundary, but it lies on top of HST, therefore we call this as type 2 sequence boundary. Remember, after every regression or sea level fall, there is once again sea level rise, and that rise will represent marine deposits. So if you look at these green clays, those glauconitic sandstones enriched in Belemnite bullet-shaped fossils. So this whole sequence is a transgressive system strata, where you have the marine deposits. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. So you have seen these Belemnites. Suleiman, I might explain what glauconite signifies as far as the depositional of plastic sediments is concerned. We have the glauconite within these sandstones, and there are marine fauna as well. So the unconformity is reported within the lower part of the Chichali Formation. Previously it was reported differently than we have done some dinoflagellate studies. So the Tithonian stage of the Jurassic and Berrizian stage of the Cretaceous is missing in the lower part. So that's the unconformity. It's a sequence boundary, and then you have the transgression. You see, it's a clay-rich lithology. Glauconite is there. Glauconite represents marine setting. You have belemnites. Belemnite is present throughout. You have a lot of phosphate nodules, which represents upwelling and precipitation of phosphorus in the form of phosphorites. But then you see this clay-rich lithology, which is making a recessional topography, is entering again into a sandstone. ठीक है, ये आपके पास ऊपर जो आप मिडल सैंडस्टोन देख रहे हैं ना, ठीक है, यहाँ पे आपके पास अब बेलेमिनाइट भी नहीं है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे सैंडस्टोन डिपोजिशन स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब है कि कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस यहाँ से फिर स्टार्ट हो गई, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से ट्रांसग्रेशन लोअर पार्ट से और वहाँ सैंडस्टोन तक पूरा ट्रांसग्रेशन, और इसी को आप मैक्सिमम फ्लडिंग सरफेस भी मार्क कर लें, क्योंकि ये पूरा क्ले रिच ऑर्गेनिक रिच लिथोलॉजी है। ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक में डिपॉजिट होगी लोअर पार्ट ऑफ द चिचाली फॉर्मेशन, जहाँ से ये मिडल ग्लाकोनेटिक सैंडस्टोन यूनिट है, यहाँ से फिर सी लेवल ने स्टार्ट किया फॉलिंग, और इसके बैक साइड पे भी यही ग्लाकोनेटिक सैंडस्टोन है, और आहिस्ता सी लेवल फॉल हो रहा है, और फाइनली आपके पास वाइट क्वार्ट्जो सैंडस्टोन जो कि बीच में डिपॉजिट होता है लमशीवाल का, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप फिर सीक्वेंस बाउंड्री में एंटर हो गए, ठीक है। जिस तरह शिनावरी से समाना सुख स्टार्ट हुई थी और वो HST में डिपॉजिट हुई थी, और इसके टॉप पे ये अनकन्फर्मिटी है, यहाँ से फिर ट्रांसग्रेशन वहाँ तक सैंडस्टोन तक, मिडल सैंडस्टोन तक, वहाँ से फिर रिग्रेशन कोर्सनिंग अपवर्ड सीक्वेंस है, और वो आपके पास आहिस्ता आहिस्ता वो जो ऊपर वाइट सैंडस्टोन है, ठीक है, वहाँ पे आपके पास मैक्सिमम रिग्रेशन बीच काइंड ऑफ सेटिंग सीक्वेंस बाउंड्री फिर यहाँ पे डेवलप हो गई। तो इसका अपर पार्ट जो चिचाले का है ये हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक में डिपॉजिट हुआ है, और फिर इसके टॉप पे आपके पास हंगू के स्वाम्पी शेल्स जिसमें कोल भी है, वहाँ से फिर another episode of transgression has started. Okay, one more thing. We have discussed the concept of fluvially dominated delta system and tide dominated delta system. Fluvially dominated delta system develops in a regressional episode. If you look at the Lamshiwal sands, these are fluvially dominated delta system, where you have the B setting and delta front setting, etc. Various sandstone lithologies are there, but it is fluvially dominated delta system. So fluvial dominated delta system is an indicator of sea level fall. So on top of these you will definitely have
either exposure of the platform. If it is preserved, you can have the unconformity, but in this region we do have KT boundary, like Kavagar formation is missing. We have the Chichali, Lamshival, Kavagar is missing, and then we have the Hangu formation. So in between we have the KT boundary. This is third unconformity. We have the PT boundary, Permian Triassic boundary as well, between the Amvargal Chidru formation and Miyawali formation. So that was second unconformity, but here we have this unconformity which is the KT boundary. So this is another evidence of disconformity, where time gap is involved.